So hello all, I welcome you all in our next video of Prayag Public School, and this video is for class 8, right? And today we are going to study lesson 12, that is future tense, right? So if you remember, in our last video we have gone through the chapter that was lesson 11, right? Past tense, where we have studied the definition of past tense with examples, and we have completed the four main subparts of past tense, right? With examples and other things as well. We have completed the exercises as well. So today we are going to start lesson 12, that is future tense, right? So in the first video, when this chapter or when the tense started, like lesson 10, I have already told you what is future tense. So what is future tense? It expresses an action which is going to happen or take place in the near future, right? So let's study the first main subpart of present tense, that is future tense, that is simple future tense, right? So it is the first subpart of future tense, that is simple future tense. So let's see what is it. It expresses an action, right, which is likely to take place, right, which is likely to take place or happen in the near future, right? तो ये किस तरीके के एक्शन को एक्सप्रेस करता है? ये उस तरीके के एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो कि नियर फ्यूचर में, मतलब आने वाले समय में होने वाला है, which is likely to take place or happen in the near future, or likely to happen in the near future, right? So simple future tense express those actions which is going to happen or which is likely to take place or which is likely to happen in the near future. Okay, let's study further. Will and shall are used to express the simple future tense action, right? Simple future tense action को express कौन-कौन से वर्ड करते हैं, या दो वर्ड होते हैं, वो है will और shall. ये दोनों वर्ड ऐसे होते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं, अगर हम सेंटेंस में इसको यूज करते हैं इन दोनों वर्ड में से किसी एक को, तो वो क्या करते हैं, वो उस सेंटेंस के एक्शन के बारे में ये बताते हैं कि ये एक्शन फ्यूचर में होने वाला है. So will and shall are used to express the simple future tense action, right? And sometimes it is very important that the line that I'm about to read right now. And sometimes we also use am, is, are, going to express future actions, right? तो will और shall तो यूज होता ही होता है, पर कभी कभार हम am, is और are going to, like am going to, is going to और are going to भी हम यूज करते हैं क्या एक्सप्रेस करने के लिए, फ्यूचर एक्शन, राइट? तो ये वर्ड जो है, ये आप am going to, then is going to और are going to, ये है क्या, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्ड है, राइट? ये वर्ब है और ये going to एक्शन वर्ब है, राइट? तो ये दोनों मिला के जब हम यूज करते हैं तो ये सारे वर्ड हैं क्या, अगर am going to पढ़े या is going to या are going to, ये है क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, बट लिखा जरूर जाता है सेंटेंस में इस तरीके से, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्प हम लेते हैं, बट ये वर्ड भी कभी कभी क्या करते हैं, फ्यूचर एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू लीव द स्कूल आफ्टर 2 hours. तो मैंने क्या बोला, आई एम गोइंग टू लीव द स्कूल आफ्टर 2 hours, मतलब मैं 2 घंटे में स्कूल छोड़ दूंगा या स्कूल के बाहर या स्कूल से चला जाऊंगा. तो मैंने यूज किसका किया, मैंने यूज किया आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू का यूज किया. वो क्या वर्ड, वो कौन से कहाँ का वर्ड है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्ड है, राइट? बट एक्सप्रेस क्या कर रहा है, फ्यूचर एक्शन एक्सप्रेस कर रहा है कि 2 घंटे बाद मैं स्कूल से चला जाऊंगा या स्कूल छोड़ दूंगा. इसका मतलब है कि अभी वो एक्शन हुआ नहीं, बट ऐसा होने वाला है, 2 घंटे के बाद ऐसा हो जाएगा. तो दैट मीन्स जो एक्शन है वो फ्यूचर में होगा, बट मैंने जिस वर्ड से एक्शन को एक्सप्रेस किया वो क्या वर्ड है, वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, राइट? तो विल और शैल के साथ गोइंग टू भी, लाइक एम गोइंग टू, इज गोइंग टू और आर गोइंग टू का यूज हम करते हैं क्या बताने के लिए, फ्यूचर एक्शन बताने के लिए, राइट? लेट्स सी द सेंटेंस स्ट्रक्चर. सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल फ्यूचर टेंस का, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर. पहला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, राइट? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, देन प्लस वर्ब, और वर्ब कौन सा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट will और shall प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल देख लेते हैं. पहला है आई शैल गो फॉर पिकनिक टुमारो, राइट? तो आई क्या है, आई इज अ सब्जेक्ट, शैल क्या है, ये है हेल्पिंग वर्ब,
which is expressing future action. Go, first form of the word, this is an action word, which is the first form of the word. For, then picnic, that's the common noun. Tomorrow, that is adverb of time, right? So I shall go for picnic tomorrow. That means it is saying the I, which is a subject, he is saying something, or he is going to do some action which is likely to take place in the near future, right? तो ये कब होगा? टुमारो, मतलब अभी हुआ नहीं है और ना हो गया है, बल्कि होगा कहाँ पे? फ्यूचर में. तो ये कौन एक्सप्रेस कर रहा है? ये तो टुमारो तो टाइम बता रहा है, बट आई शैल, मतलब ये शैल एक ऐसा वर्ड है among these words which are written within a sentence. This shall is the word which is expressing what? Simple future, time or tense, right? So I shall go for picnic tomorrow. That means मैं कल पिकनिक के लिए जाऊंगा. तो कल मतलब near future, means the action is going to take place in the near future. Second देखते हैं. He will come to my home or come to my house next week, right? तो he क्या है? Subject है. Will क्या है? Helping verb है, which is expressing what? Simple future, time or tense. Come क्या है? Action verb है, right? First form of the verb है. To, preposition, my, possessive adjective, right? Then house क्या है? Common noun है या noun मान लो, और next week क्या है? Adverb of time, right? So he will come to my house next week, मतलब वो मेरे घर अगले हफ्ते आएगा. तो अभी आया नहीं है, ना आया था, बल्कि आएगा. तो that means जो आने का कम वाला जो एक्शन है वो it will likely to take place in the near future. और near future कैसे पता चला है? Next week, मतलब आने वाले हफ्ते में वो मेरे घर आएगा. And what is among these written words, only will is the word which is expressing simple future, time or tense, right? So he will come to my house next week. So this is the action that will or that is likely to take place in the near future. Now the third one, they will attend the meeting today evening, right? So they will, they क्या है आपका? It is a subject. Will क्या है? Helping verb which is expressing future, time or tense. Attend क्या है? Verb, that is action verb, और ये first form of the verb है. The article, meeting, that means you can say a common noun, right? Today evening. So today evening, that means what? You can say adverb of time. So they will attend the meeting today evening. So that means they will. अभी meeting उन्होंने ना अटेंड कर लिया है ना किया था, ऐसा कुछ नहीं है. वो अटेंड करेंगे, मतलब आज शाम को वो अटेंड करेंगे. दैट मीन्स जो अटेंड वाला ये जो एक्शन है, राइट, दिस एक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर. दैट मीन्स इन टुडे और टुडे इवनिंग, राइट. So they will attend the meeting today evening. That means the future, the action which is expressing as attend or which is getting expressed as attend is likely to take place in the near future, right? So class, this is the definition that we have covered under the heading simple future tense with all these examples, right? Okay class, let's see the negative structure of simple future tense, right? So let's see what is the negative structure of simple future tense. It is written use not after will or shall, right? So after will or shall within the sentence we have to use not to express negative sense, right? So let's see example. They will not come to the party. So what is they? Is a subject. Will is a helping verb which is expressing future, time or tense, not giving a negative sense. Come, action verb which is the first form of the verb. To, preposition, the party, object, right? So over here it is expressing not only the negative sense within the sentence but also the action or an action which is going to take place in the near future. So they will not come to the party. That means वे party में नहीं आएंगे. So that means नहीं आएंगे. That means the action is likely to take place or not likely to take place in the near future. Means the coming action, their coming action will not happen in the near future, but the action will take place in the near future. Okay, second one, you will not go anywhere without permission, right? So you क्या है? You being a subject, will, helping verb, right, which is expressing the future time or tense, not giving a negative sense. Go, action verb,
which is the first form of the verb. Anywhere means adverb of time without permission, right? Is an object. So you will not go anywhere without permission. That means go जो है ये ऐसे action को express कर रहा है which is likely to take place in the near future, right? And when is expressing that time. So you will not go anywhere without permission. That means this action will not going to happen in the near future, right? Or the permission action will take place somewhere in the future only, right? And on the basis of this permission only, the action that is given or that is going to take place will happen either either it will happen or it will not in the near future. So you will not go anywhere without permission. That means this is the action, and will is the word which is expressing this action that it will or it will not take place in the near future. Third one, she will not go to the market this time. So she is a subject. Will is a helping word, right? Which is expressing the future time or future tense, not expressing what the negative tense. Go, action word, which is expressing the or which is first form of the verb. To, that means preposition, the market, object, this time, adverb of time, right? So she will not go to the market this time. That means it is this will, the word among these written words, only will is the word which is expressing that this action will not take place in the near future, right? And what the action it is talking about? That means it is talking about the action go, right? So not लग गया है इसलिए नेगेटिव सेंस आ रहा है. go जो कि एक्शन है, ऐसा एक्शन फ्यूचर में नहीं होगा. बट ओवरऑल बात कहाँ की हो रही है? फ्यूचर की. So she will not go to the market this time, right? So these were the three examples of negative structure for simple future tense. Now let us see the interrogative structure. Interrogative means the word that asks question. So interrogative structure or sentences that ask question. So interrogative structure of simple future tense. लिखा हुआ है place will और shall before the subject, right? Subject के पहले हमें क्या लिखना रहेगा सेंटेंस में? will और shall, and verb first form of the word after the subject. और verb की first form लिखनी है किसके पहले? subject के बाद, after the subject, right? So place will or shall before the subject and verb first form after the subject. Let's see example. Will they leave for Delhi? Will they leave for Delhi tomorrow, right? So will क्या है? ये है आपका helping word which is expressing future action and it is also acting as an interrogative word. ये interrogative word की तरह काम कर रहा है क्योंकि इन sentences में, इन words में या इस सेंटेंस में जितने भी लिखे हुए वर्ड्स हैं सिर्फ यही एक वर्ड है will, जो कि किसकी तरह काम कर रहा है, जो कि क्या पूछने में हेल्प कर रहा है? क्वेश्चन पूछने में. तो will जो कि हेल्पिंग वर्ड भी है, फ्यूचर एक्शन भी दिखा रहा है और इंट्रोगेटिव वर्ड का भी रोल प्ले कर रहा है. तो will they क्या है? सब्जेक्ट. will they leave क्या है? एक्शन वर्ड विच इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड. will they leave for Delhi tomorrow? तो कहाँ की बात हो रही है? आने वाले समय की, कि क्या वो कल दिल्ली जाएंगे. तो अभी गए नहीं है ना जा चुके हैं बल्कि जाएंगे. तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वो ऐसा करेंगे, क्या वो दिल्ली जाएंगे. तो दैट मीन्स द होल in this sentence the time is getting discussed which is likely to take place in the near future, right? And at last I have inserted a mark, that is a question mark. Why? Because it is a question sentence, or with the help of will we are asking a question. Let's see the second one. Shall I close the door? So shall क्या है? Helping verb है, right? Which is expressing future tense, and it is also acting. The shall is also acting as an interrogative word. I being a subject, close action verb, और कैसा verb है? First form of the word लिखा हुआ है. The door is an object, right? And again I have inserted or written question mark because it is a question. Shall I close the door? That means ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या मैं डोर बंद कर दूं. अभी किया नहीं गया था या किया नहीं गया है और ना हो चुका है, ये बस होने वाला है. ऐसा पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा कर सकते हैं या कर सकता हूँ. दैट मीन्स अगर ये ऐसा होता है तो कहाँ होगा? फ्यूचर में होगा. तो दैट मीन्स द शैल इज एक्सप्रेसिंग व्हाट? फ्यूचर टाइम और फ्यूचर टेंस. तो शैल आई क्लोज द डोर? दैट मीन्स क्या मैं डोर बंद कर दूं या बंद कर सकता हूँ. तो इसका मतलब है
the action Michelle is talking about the action which will take place in the near future. Will he come to the school today? Will he come to the school today? So will क्या है यहाँ पे? Again, it is a helping word which is talking about future time or future tense, and this will is also acting as an interrogative word because it is asking a question. He being a subject, come action word, right, which is the first form of the verb, to preposition, school, object, and today, that is adverb of time, and then I have written or inserted action, question mark, right? Why? Because it's a question sentence. So will he come to school today? That means it is asking a question which is about to take place, or it is telling about the action which is likely to take place or happen in the near future. That he will come to school today. क्या वो स्कूल आएगा? मतलब अभी आया नहीं है ना आ चुका था, बल्कि क्या वो आएगा? दैट मीन्स उसका आना अभी कहाँ पे डिपेंड करता है? फ्यूचर में. So will he come to school today? Right? So it's in this will is expressing the action that is going to take place in the near future. So class, these were the three examples of interrogative structure of simple future tense, right? So okay class, let's see the second subpart of future tense, right? So the second subpart of future tense is future continuous. So let's see what it states. It expresses an action, right? It expresses an action that will be going on at some point of time in the near future, right? So it expresses an action that will be going on at some point of time in the near future, right? तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या कहते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस उन एक्शंस के बारे में बताता है जो कि फ्यूचर में हो रहा होगा, राइट, या चल रहा होगा, मतलब गोइंग ऑन होगा. तो इट एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन, मतलब ऐसे चल रहा होगा या हो रहा होगा, ठीक है. विल बी गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय होगा फ्यूचर में, और वो एक्शन या कोई भी ऐसा एक्शन जो हो रहा है या हो रहा है उसको हम क्या या हो रहा होगा उसे हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है. और कहाँ पे हो रहा होगा? ये नियर फ्यूचर में, मतलब आने वाले समय में. तो इट एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द नियर फ्यूचर. तो सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, ये देख लेते हैं. इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी आता है प्लस वर्ब, और कौन सा फॉर्म? वर्ब का कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट. तो ये होते हैं आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, विल और शैल होता है, देन बी आता है जो कि रूल है, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. वर्ब का कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. So let's see the example. I shall be playing football in the evening, right? So I shall be playing football in the evening. इसका मतलब क्या है कि मैं शाम को फुटबॉल खेल रहा हूँगा. तो खेल रहा हूँगा इसका मतलब है ये कहाँ की बात कर रहा है? फ्यूचर की, कि ऐसा फ्यूचर में एक समय आएगा कि ऐसा हो रहा होगा, ठीक है. तो आई क्या है? आई बीइंग अ सब्जेक्ट, शैल प्लस बी शोइंग व्हाट? इज अ हेल्पिंग वर्ब, राइट. नॉट बी बट शैल इज अ helping verb which is showing the future time. B which is a rule. Playing is an action verb, और कौन सा action verb है? ing form of the verb है. Football is an object, or you can say noun, common noun. In preposition the evening is an object, right. So I shall be playing football in the evening, मतलब मैं शाम को फुटबॉल या आज शाम को फुटबॉल खेल रहा हूँगा. तो खेल रहा होगा इसका मतलब है ऐसा एक समय आएगा कि ये एक्शन, प्लेइंग वाला एक्शन हो रहा होगा. दे विल बी कमिंग फॉर लंच टुमारो. तो दे क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है. विल क्या है? ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, राइट, विच इज एक्सप्रेसिंग द फ्यूचर टाइम, राइट. बी इट इज अकॉर्डिंग टू द रूल. कमिंग एक्शन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. For preposition, lunch common noun, and tomorrow adverb of time, right. So they will be coming for lunch tomorrow, मतलब वो कल लंच पे आ रहे हैं, ठीक है. तो वो कल लंच पे आ रहे हैं इसका मतलब है ऐसा एक्शन अभी ना हुआ है, ना हो चुका है, ना हुआ था, बल्कि ऐसा होगा. मतलब एक समय आएगा, मतलब कल का समय, ऐसा कल वाला जो समय आएगा उससे ये कमिंग वाला एक्शन हो रहा होगा. तो दे विल बी कमिंग फॉर लंच टुमारो, मतलब वो कल लंच पे आ रहे हैं.
तो आ रहे हैं, उनके आने का एक्शन कहाँ हो रहा होगा, कल हो रहा होगा, आने वाले समय में हो रहा होगा. तो दैट मीन्स विल बी कमिंग, दैट मीन्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. यहाँ भी शैल बी प्लेइंग, दैट मीन्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. विल और शैल क्या दिखा रहे हैं, विल बी और शैल भी क्या दिखा रहे हैं, फ्यूचर टाइम दिखा रहा है, और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, कॉन्टिन्यूस दिखा रहा है. थर्ड वन, he will be waiting for the train at the station, right? So he क्या है, again subject, will, helping verb, right, which is showing the future tense or time. Be, according to the rule, waiting, ing form of the verb. For क्या है आपका, it is a preposition, the train, object, at the station, at क्या है preposition, and the station again object, right? So he will be waiting for the train at the station. So ही क्या है, सब्जेक्ट है, विल बी वेटिंग क्या है, पूरा क्या दिखा रहा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. तो ही विल बी वेटिंग फॉर द ट्रेन एट द स्टेशन, मतलब वह स्टेशन पे ट्रेन के लिए वेट कर रहा होगा. तो कर रहा होगा इसका मतलब है आने वाले समय में वो ऐसा होगा कि वो स्टेशन पे रहेगा, और वो किसके लिए वेट कर रहा होगा, ट्रेन के लिए. तो दैट मीन्स will be expressing the waiting action which will get continue, or which will be continuing in the near or coming future, right? So he will be waiting for the train at the station. That means these three sentences are the example of future continuous. And what it does is it expresses an action which is likely to take place in a continuation form in the near future, right? So let's see the negative structure of future continuous. अब negative structure देख लेते हैं कौन क्या होता है future continuous का. Place not, right? So place not between will and shall and be, right? So जो be होता है will और shall के साथ हम यहाँ पे आप देख सकते हो shall के साथ क्या यूज किया, be, will के साथ भी क्या यूज किया, be, यहाँ भी will के साथ क्या यूज किया, be. तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, not. तो वही यहाँ पे लिखा है place not. not को लिखना है किसके बीच में, will और shall and be के बीच में. देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, आई शैल नॉट बी टीचिंग दिस लेसन टुमारो. तो आई क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट है, राइट, इट्स अ सब्जेक्ट. शैल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, which is showing the future tense or time. Not expressing what, the negative tense in the sentence. Be, according to the rule, teaching, ing form of the verb. Then interrogative, not interrogative, it is demonstrative adjective, right? Lesson, common noun, tomorrow, adverb of time. So I shall not be teaching this lesson tomorrow. इसका मतलब है क्या, ये बात कर रहा है कि मैं इस लेसन को कल नहीं पढ़ा रहा हूँगा. तो पढ़ा रहा हूँगा इसका मतलब है फ्यूचर की बात हो रही है कि कल ऐसा समय आएगा, ये एक्शन नहीं हो रहा होगा. नहीं क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें नॉट लगा होगा. तो shall is expressing the future time, and and which action it is referring that will not be taking place in the future. It is referring to teaching that will not be taking place in the near future, right? But the whole process of the sentence is to express an action or tell about an action that is going to take place or not going to take place in the continuation form in the coming future, right? So I shall not be teaching in the this lesson tomorrow. She will not be writing letter for them, right? So she क्या है, हमारा subject है, will क्या है, it is an action, helping verb, right? Which is expressing future time or future tense, not giving a negative sense. Be, that is according to the rule. Writing, ing form of the verb. Letter, common noun. For them, for preposition, them, that means the objective case of they, right? The objective case of they. So she will not be writing letter for them. That means ये कहाँ की बातें कर रहा है, it is expressing an action that will likely to take place or that will take place in a continuation form in the near future. That she will not be writing मतलब वो उन लोगों के लिए लेटर नहीं लिख रही होगी. तो नहीं लिख रही होगी इसका मतलब कहाँ की बात हो रही है, it is talking about this sentence is talking about the action that will take place in a continuation form in the near future, right? So class, with these two examples of negative structure and with these three examples of positive structure of future continuous with the definition, we have come to an end or about future continuous tense.
So class, let's see the interrogative structure of future continuous tense, right? So let's see the interrogative structure. What it says: will or shall is placed before the subject, right? And be follows them, right? So what happened is we have to place will or shall before the subject. Subject से पहले हमें will और shall का use करना है, और जो be होता है इन दोनों को follow करता है sentence, right? So example देख लेते हैं. Example है, will they be living in the house next week? So will, which is a helping verb, ठीक है? It is showing the future time or tense, and it is also acting as an interrogative word, right? Because of this only we are able to ask a question, and that is why it is acting as an interrogative word as well. So will, helping verb, they being a subject, be is according to the rule, living, which is an action verb, ing form of the verb, in preposition, the house, object, next week, that is adverb of time, and at last I have inserted what? A mark, that is a question mark, because it is an interrogative sentence. So will they be living in the house next week? क्या वो अगले हफ्ते इस घर में रह रहे होंगे? तो रह रहे होंगे इसका मतलब है कहाँ की बात हो रही है? फ्यूचर टेंस की, कि एक एक्शन, लिविंग वाला एक्शन हो रहा होगा, पर कहाँ पे? फ्यूचर में, राइट? So will they be living in the house next week? So that means this is a sentence which is an interrogative sentence, but expressing an action which is likely to take place in the near future, but in continuation form. Shall I be working on this assignment tomorrow? Right? So shall, again, it's a helping verb. Which is expressing future tense or time, and again it is acting as an interrogative word. I being a subject, right? Be, according to rule, working, which is an action verb. Which form of a verb? Ing form of the verb. On, preposition, this, demonstrative adjective, right? Assignment, noun, or you can say common noun, right? Common noun, and then tomorrow, adverb of time, and then what I have written or inserted question mark, because it is an interrogative sentence. Shall I be working on this assignment tomorrow? इसका मतलब क्या हुआ कि क्या मैं इस assignment पे कल काम कर रहा हूँगा? तो कल इसका मतलब ना ये काम अभी हुआ नहीं है, ना हो गया था, ना हो चुका है, बल्कि हो रहा होगा, और कहाँ पे? Near future में. That means shall is a word that is expressing what the action which is working is going to take place in a continuation form in the near future, right? So shall I be working on this assignment tomorrow? Will you be attending tomorrow's meeting, right? So will, again, what is it? It is a helping word which is showing a future tense or future time, and what else it is acting? It is acting as an interrogative word. Why? Because it is a word which is helping us in asking a question. You being a subject, be, according to rule, attending is an action word, and what kind of a verb it is? Ing form of the verb. Tomorrow, that means adverb of time, and meeting, and again you can see I have inserted or written a question mark, right? Why? Because it is an interrogative sentence. So will you be attending tomorrow's meeting? Now this is asking कि क्या तुम कल की मीटिंग अटेंड कर रहे होगे? तो या कर रहे हो? तो कर रहे हो या कर रहे होगे इसका मतलब है कि कहाँ की बातें कर रहे हैं? It is talking about an action that will take place in a continuation form in the near future, right? So class, with these three examples of interrogative structure of future continuous tense, we have come to an end of this particular part. That was the second subpart of future tense, that is future continuous.